Hi guys, welcome back to the channel. So we have completed the main headings or main topics of inflammatory and reactive disease of oral and maxillofacial region, and now we will be starting with infectious diseases of oral and maxillofacial region. In this also we'll be dealing 2 or 3 the most common or one or which is asked only. In that also I have not deal with every topic or every topic under inflammatory and reactive diseases. I have dealt only with the topic which are commonly asked. Okay, let's start. Infectious disease of the oral and maxillofacial region. First is oral tuberculosis and scrofula. Clinical presentation and pathogenesis. Oral region of tuberculosis will present as painful, ragged ulcer which are infected mostly on the posterior aspect of the oral tongue, pharyngeal tongue or palate. So they are present as painful, ragged ulcers which are infected, and painful भी इसलिए होता है because infected ulcer are present mostly on posterior aspect of the oral tongue, pharyngeal tongue or palate. They are almost always secondary to active pulmonary TB which seeds the oral site from covered up sputum. So they are secondary. Oral tuberculosis are secondary to the active pulmonary TB. Further, invasion into bone may create a TB related osteomyelitis. और जब bone के अंदर invasion हो जाता है तो it will cause tuberculosis related या TB related osteomyelitis. The incidence is higher within densely populated areas, lower socio-economic status, aged population, HIV individual and immunocompromised individual. So they are more prone to mycobacterium tuberculosis. So they are more prone to TB. Densely populated, lower socio-economic status, aged, HIV infected individual and immunocompromised individual. Okay. Transmission occurs via aerosolized droplets which seeds organism into the lungs that persist viably within macrophages after ingestion. तो माइक्रोफेज इनको इंजेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन इट परसिस्ट. ओके, these organism and macrophages become contained or walled off within a granuloma. तो ये ग्रैन्युलोमा में बन जाते हैं. ऑफन कॉल्ड द प्राइमरी इन्फेक्शन, दिस साइट इज एसिम्टोमेटिक. ये प्राइमरी इन्फेक्शन का साइट है बट इट इज़ एसिम्टोमेटिक. लंग्स इज अ प्राइमरी इन्फेक्शन साइट बट इट इज एसिम्टोमेटिक. एक्टिव टीबी डेवलप एज अ रीएक्टिवेशन ऑफ दिस प्राइमरी डिजीज़. जो एक्टिव टीबी हम लोग को दिखेगा या एक्टिव पल्मोनरी टीबी दिखेगा, इट इज़ द रीएक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी डिजीज़. ये प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, इसका जब रीएक्टिवेशन होगा किसी भी रीज़न से तो हम लोग को एक्टिव टीबी डेवलप होगा. ओके, now what are the differential diagnosis? First is squamous cell carcinoma, then primary syphilis, histoplasmosis and blastomycosis and oral ulcers by trauma. So all these will cause ulcer which are similar to tuberculotic ulcer. Now coming to diagnostic workup, require biopsy to rule out carcinoma and fungal lesion, that is histoplasmosis and blastomycosis. Now टिश्यू स्पेसिमेन फॉर एसिड फास्ट स्टेनिंग, मेनली जीन लिंसन करते हैं हम लोग, एंड फॉर कल्चर इन लॉन्स्टन जेंसन मीडियम. ठीक है, टिश्यू स्पेसिमेन चाहिए हम लोग को बिकॉज इट इज़ एसिड फास्ट बैसिलाई. जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वो जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है दैट इज़ एसिड फास्ट बैसिलाई. तो इसलिए हम लोग को एसिड फास्ट स्टेनिंग करना होता है. मेनली इट इज़ डन बाय जीन लिंसन एंड फॉर कल्चर कल्चर इज़ डन इन लॉन्स्टन जेंसन मीडियम. अनदर टिश्यू स्पेसिमेन शुड बी सेंट फॉर H&E हिस्टोपैथोलॉजी. ओके, हिमेटॉक्सिलिन एंड नियोसिन हिस्टोपैथोलॉजी तो रूल आउट कि हिस्टोपैथ में कैसा दिख रहा है बैसिलाई, तो टू रूल आउट. ओके,
Now that's all for today. We'll be continuing this in the next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.